So good afternoon, students. My name is Prashant Bhandari, and basically I'm a biology tutor, and I train the students for NET preparations, KVPY, and other medical entrance examination. So I have the total experience of 13 years in this field. So my passion is to train the students who are very passionate to clear the exam of NET, especially KVPY. So basically, I used to teach both botany and zoology. That is my favorite part is basically zoology, and basically I want to train those students who are willing to clear the NET exam, especially. So today we will going to discuss a topic, a small topic, which belongs to the chapter human health and disease. So human health and disease has many topics like immune system, uh, different kind of diseases in the beginning. So we will discuss a small question. We will discuss a small topic with the help of a question. So I'm going to share a screen with you guys. So kindly please observe the screen very carefully. The question is, what is the question basically? Cannabinoid receptors. So I'm going to share the screen. I hope you are seeing the screen. Cannabinoid receptor. Cannabinoid receptor present mainly in A option CNS, B option brain, C option PNS, D option GI tract, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज डाइजेस्टिव ट्यूब. सो कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स जो हम कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन का कैनाबिनोइड रिसेप्टर है, दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन. दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन ब्रेन. तो इसका आंसर जो है ब्रेन है. थोड़ा सा हमें इसको एक्सप्लेन करना है. इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वी विल डिस्कस विद यू गाइस. तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या बताएंगे आपको कि एक्चुअली ह्यूमन कैनाबिनोइड सिस्टम जो है, ह्यूमन कैनाबिनोइड system. Human cannabinoid system include two receptor. That is cannabinoid 1 receptor and cannabinoid 2 receptor. Cannabinoid 1 receptor is present in brain, but also present in, they're also present in lungs, liver, and kidney. Lungs, liver, and kidney. And the cannabinoid 2 receptor, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए थे वहां पर ये सब नहीं दिया था. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लंग्स नहीं मेंशन था, लिवर नहीं मेंशन था, किडनी मेंशन नहीं था. बट मेनली आपको ये ब्रेन में, मेनली हमें ये प्रेजेंट होते भी ब्रेन में ही है. कैनाबिनोइड रिसेप्टर आर मेनली प्रेजेंट इन ब्रेन, बट दे आर ऑल्सो कैनाबिनोइड 1 रिसेप्टर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लंग्स, लिवर, किडनी. तो कैनाबिनोइड 2 रिसेप्टर आर प्रेजेंट mainly in the immune system, mainly in the immune system like T cell, macrophage,
B lymphocytes, B cells, and hematopoietic stem cell. Hematopoietic stem cells जो होती हैं आपकी basically, hematopoietic cells, stem cells are present inside the bone marrow, red bone marrow. We all know that these cells are the responsible for the formation of every blood cell in the bone marrow. And bone marrow, which is also called as, bone marrow is actually of two types, red bone marrow and yellow bone marrow. The red bone marrow has the hematopoietic stem cells, which produce all the kinds of blood cells inside the bone marrow. So तो यहाँ पे हमने जैसे कि देखा कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स रिसीव किसको करते हैं, कैनाबिनॉइड्स केमिकल्स को. कैनाबिनॉइड्स केमिकल्स आपको पता है कि कैनाबिनॉइड्स केमिकल्स कौन कौन से होते हैं जो मिलते हैं. सबसे फेमस जो है, जो कि हेलुसिनेशन करता है जब हम कैनाबिनॉइड्स लेते हैं, तो हेलुसिनेशन कॉज करता है, उसका नाम होता है टेट्राहाइड्रो कैनिबिनोल, टेट्राहाइड्रो कैनिबोल. और ये केमिकल रिसेंटली अभी यूज भी हो रहा है कैंसर के ट्रीटमेंट में. टेट्राहाइड्रो कैनिबोल known as THC chemical, which binds to cannabinoid 1 receptor. In brain. There is also a chemical known as cannabinol, which binds with cannabinoid 2 receptor. Cannabinoid 2 receptor. So that's why इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिया गया था ब्रेन, बिकॉज यहाँ पर जो बात की गई है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दिया गया, तो एक ही ऑप्शन सीएनएस में बेसिकली ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, तो ये ऑप्शन हम चूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट ही ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज सीएनएस में ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड भी आता है. और बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि यहाँ पे ब्रेन ही लिखा हुआ है. पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, ना ही जीआई ट्रैक में होते हैं, तो हमें यहाँ पर इस ऑप्शन में सिलेक्ट करना पड़ेगा ब्रेन. सो दिस इज ऑल अबाउट कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स. एंड मैंने आपको बता दिया है कि ये दो तरह के होते हैं, कैनाबिनॉइड 1 रिसेप्टर एंड कैनाबिनॉइड 2 रिसेप्टर. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. Thank you very much for your attention, and we will see you soon in upcoming videos. Thank you very much.